So whenever you're talking about the introduction has to be focused only on creating the introduction का मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसके ऊपर उसको बस लिमिटेड रखो. Means if a question say, if I talk about a question, for example, if I talk about a question, what the question says, let's look a sample. People who decide a career early in life and keep to it are more likely to have satisfying working life than those who change jobs frequently. To what extent do you agree or disagree? अब इसका सबसे बड़ा तरीका बढ़िया तरीका होता है इसको बॉटम्स अप लेने का. बॉटम्स अप लेने का मतलब आता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री को ले लिया. अब नाउ आई नो द टोन व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक कि जो लोग जिंदगी के अंदर कैरियर को जल्दी अपनाते हैं और सारी उम्र ताउम्र उसको चलाते हैं, सारी उम्र चलाते हैं उसको, है ना, उनकी जो वर्किंग लाइफ जो है ज्यादा सेटिस्फाइंग रहने की राइट पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है बजाय कि उनकी जो नौकरी बार बार बदलते हैं. आप इस बात से कहां तक सहमत हैं, मुत्तफिक हैं या राइट करेक्ट? क्या करना है तफरी? वो तो राजा बेटा है, राजा बेटा राजा बेटा तो है नहीं साले फीस जमा करा रहे थे. राजा बेटे से राजा बेटा टेंशन होता है राइट करेक्ट. अब आप इस बात से कहां तक मुत्तफिक है कि जो लोग जिंदगी में कैरियर को जल्दी अपनाते हैं और उसी में सटीक लगे रहते हैं उनकी वर्क लाइफ जो है, उनका प्रोफेशनल जो कैरियर है वो ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है, खुशनुमा होता है उन लोगों से ज्यादा जो लोग नौकरियां बार बार बदलते हैं. अब मुझे लिखने की क्या जरूरत है, वर्किंग इज ऑलवेज अन इम्पोर्टेंट. अरे बाबा क्रिएटिविटी अगर ना चले दिमाग तो क्या करोगे? I can simply start with this. It has often been a hotly. It is profoundly debated whether those who embrace an occupation quite early in life and look continue working in that right job, right, are happier, right, than those who switch employments frequently or not. Badi, it is a debatable, it is a profoundly debated whether those right embracing an occupation early in life and continuing to work in it lifelong, right, earn satisfying working experience, more satisfying working experience than those who switch employment frequently. This matter needs right to be critically analyzed before arriving at a logical conclusion. That's a simple thing. अब दिक्कत ये क्रिएटिविटी झाड़नी थी, किसी ने बोल दिया यूट्यूब वाले भैया ने, वो जी क्रिएटिविटी दिखाओ क्रिएटिविटी. वहां पे वो क्या लिखा था, वो क्रिएटिविटी कैसे दिखाया, महात्मा गांधी का आजादी के में कितना बड़ा हाथ बना के आगे इतना बड़ा नहीं. So, that's up to you, no? It hardly matters कितना बड़ा हाथ बनाओगे, ठीक है? So don't show that creativity, right? Creativity is to be shown in the body paragraphs where you're going to discuss the matter. It can be done anywhere, right? Some people believe अब कुछ ना भी चल रहा है उसमें दिमाग नहीं चल रहा, don't feel like writing anything. What to do? There is a school of thought that suggests that those who embrace an occupation right quite early on and continue working in that, engaging in that for life, earn more satisfying work experience
work experience than their counterparts who switch employment frequently, comma, but others fail to conquer with this. बात खत्म हो गई. See, right? Correct. This essay will discuss this matter in profoundly and share a plausible conclusion. Right? Can be anything. But only thing is, सिर्फ टॉपिक पे सटीक रखो, बोल जाए, उधर उधर मत भागो. चाय मंगवा ले, तो बोल गया बार बार. राइट. सेकेंड, अब क्या करना है यार, चाहिए. राइट. ओके. Does embracing an occupation early on in life and continuing working in that a more satisfying experience than switching employments is a matter that needs critical analysis. Right? That's very simple. Right? You can say that. It hardly needs anything else. Right? You have to work on the skills. So यहाँ पे मांगा गया introduction को just focus on the question itself. जैसे जो चेंज करते हैं frequently, तो लिखेंगे ही, वो तो बताऊंगा, बट पहला बात है इंट्रोडक्शन. पहला काम जो है इंट्रोडक्शन ही है भाई, और कुछ भी नहीं है. यहाँ पे सिर्फ तो इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ पहले. वो बात की बात तो यही है. Creativity is to be shown later, not in the introduction itself. Right? So keep it very simple. There's a common perception that those embracing an occupation quite early on and continue working in it for lifelong, right, earn more satisfying working experience than their counterparts who switch employment frequently. This statement can be challenged, right? No, right? This statement can be challenged on concrete grounds. Ye introduction on concrete grounds, on various grounds, on various aspects. This is what introduction is. There should not be any dilemma about writing introductions. यार सीधा क्वेश्चन पे फोकस कर दो, उसके बात खत्म हो गई यार. अब जो आगे चलना वो तो अलग बात है कि भैया ठीक है, the people who are working lifelong in a company, उन्होंने जल्दी शुरू किया तो they start earning mastery in that skill. मास्टरी ले लेते हैं, लंबा काम करने से जो है एक काम में वो जो है स्किलफुल हो जाते हैं, प्रोफिशिएंसी गेन कर लेते हैं, डेक्सटेरिटी गेन कर लेते हैं, बहुत कुछ गेन कर लेते हैं. और एक कंपनी एक ऑक्यूपेशन में जुड़े रहने से उनका नाम भी होता है, उस फील्ड में उनका नाम भी हो जाता है. और प्लस जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उनको लगता है कि वो एम्प्लॉय लॉयल है, तो उसको जो है एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं और एम्प्लॉयर जैसी इज्जत भी मिलती है. हो सकता है ना. लिखने की बात तो ये है, मगर दूसरी तरफ कहते हैं नहीं, इट इज सेटिस्फाइंग फॉर दोज हु स्विच एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इससे एक तो फास्टर जो है सैलरी हाइक मिलता है, नई स्किल्स सीखने को मिलती है, नए एनवायरमेंट्स के बारे में पता लगता है, और प्लस जो है प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस बनता है. जितने भी टॉप नॉच डायरेक्टर्स या वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं वो एक इंडस्ट्री से उठ के नहीं आते, वो मल्टीपल इंडस्ट्री में काम करने के बाद इस लेवल पे पहुंचते हैं, बिकॉज देयर सीजनिंग इज वेरीड. एक एम्प्लॉयमेंट में रहने से एक ही स्किल में उन्होंने परफेक्शन है, तो मगर यहाँ क्या हो गया, मल्टीपल स्किल्स. वही तो मैं कह रहा था कि कॉन्ट्रडिक्शन ना हो गया. तो सर उसमें वो लिखा है ना कि दोज हु चेंज फ्रीक्वेंटली उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग रहते हैं. हाँ तो मैं वो कह रहा हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों करूंगा भाई. कॉन्ट्रडिक्शन होता है एक पॉइंट को दूसरे तरीके से देना. सर दोनों में आप नहीं बोलते ना कि वो भी मतलब वो एक स्किल में ही गेन कर रहे हैं ना. वो एम्प्लॉयर उनको लॉयल मानता है, उनको बेनिफिट देता है, मगर एक्चुअली में जो लोग जॉब हॉपिंग करते हैं उनको फास्टर जो है उसको फास्टर मिलता है, सैलरी हाइक भी मिलता है, उनको पोजीशन हाइक भी मिलता है.
इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी मिलता है, उनकी विजिबिलिटी भी बढ़ती है इंडस्ट्री में जगह जगह काम करने से, राइट। और ऐसे लोग क्या है जो टॉप नॉच डायरेक्टर या वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, दे आर एक्चुअली दे आर इन दिस कैटेगरी who have got a varied experience of working in various fields, right? They are not just focused on one trade. Got the point? So this is what it is. But introduction should be limited to what you are only talking about. The examiner को ये बोले ये वाला क्वेश्चन है, इसी को मैं हैंडल करने वाला हूँ. Confusing क्यों करना आप लोगों को? Right? This is what happens. ठीक है? Correct. अब यहाँ पे बोल रहा है some people believe that it is best to accept the bad situation such as an unsatisfactory job or shortage of money. Others disagree that it is better to try to improve the situation. Discuss and give your opinion. अच्छा चलो अनसेटिस्फैक्टरी जॉब, और आपने हालांकि उसने एग्जांपल दिया था, इट वाज नॉट फोकस्ड कंप्लीटली ऑन दिस, बट चलो आपने ले लिया उसको, अनसेटिस्फैक्टरी जॉब भी ले लिया, शॉर्टेज ऑफ मनी भी ले लिया, मगर यहाँ पे क्या है, दो व्यू. The society has lived at poles when it comes to accepting change or not. Some feel it should be done. That situation should not be accepted. Others feel it is better to stay where you are, where one is. बात खत्म हो गई यार. अब लंबी चौड़ी कहानी काय को लिखनी है भाई? Why to write? Make it simple, no? Keep it focused on the introduction. Should be focused on only on the topic of the subject. भाई 28 वर्ड का इंट्रोडक्शन भी कामयाब है. नहीं मैं कह रहा हूँ टू द पॉइंट लिखेंगे, वो बाद में आएगा ना, जो राइटिंग एंड द बॉडी में आएगा, वहां करना स्ट्रेच जरूरी है. इंट्रोडक्शन इज ब्रीफ. इंट्रोडक्शन शुड बी केप्ट एज ब्रीफ एज पॉसिबल. यहाँ पे ज्यादा लोड मत करो. गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? ऑनलाइन वाले भाई लोग, महक, साक्षी, Yes, sir. Rishi, getting my point? Yes, sir. So it's a very simple equation, right? Instead of getting stuck, please make it sure. Smriti, are you there with me? ठीक है? Yes, sir, I'm here. ठीक है? तो टोन पता लगता है. अब टोन कैसे पता लगता है? अब देखो दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे हम लोग. We'll look at the question. Why? How the introduction works. कैसे एग्जामिनर को पता लगता है ये बंदा ऐसे समझाएगा नहीं समझाएगा? एक बार स्मृति ऊपर वाला टॉपिक पढ़िए, वाला जो हाईलाइट किया हुआ है. Some people prefer cold weather conditions while others don't. Discuss both views and give your own opinion. Write at least 250 words and give relevant examples from your own experience. relevant example दो, नहीं देंगे तो आंसर देंगे. Generic example लेके चलाया था. For example, people living in -40 degree temperature, they feel that it is not comfortable. They can suffer from, you know. मेंशन हो जाता है. तुम ना भी करो तो भी मेंशन, जेनरिक एग्जांपल फिर मेंशन हो जाता है. जो भी हम पॉइंट लिखते हैं वो दैट इज एग्जांपल. ठीक है, अगला बढ़ियो. अगला बढ़ियो स्मृति. Some people prefer cold weather conditions while others like hot climates. Discuss both views and give your own opinion. Write at least 250 words and give relevant examples from your own experience. राइट. अब देखने में भी ऐसे सेम लग रहा है नहीं, मगर डिफरेंट है. Different है sir. उसमें क्यों? sir, पहले वाले में कोल्ड वेदर के फायदे और नुकसान है, और दूसरे वाले में कोल्ड वेदर के फायदे और हॉट वेदर के फायदे हैं. पहले वाले में तो कोल्ड का ही पूछा, दूसरे वाले में हॉट का. अब आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? some there no a lot of people, you know, like surviving in areas, yeah, regions that have cold climate, no, that are influenced by cold climate, while there are some, no, who dislike it. ये हो गया ऊपर वाले का. सिंपल बता रहा हूं, right? There is a great variance. Second वाले का, there is a great variance when it comes to choice of regions to live in, while some prefer life in, right, areas that experience, right, cold weather conditions, right.
comma, but others are others. Kalu hai. But others, right? Like the right Hot weather. tropical weather, your hot weather, right? Hot climatic zones. सर जैसे फर्स्ट वाला उसमें नहीं लिखना फिर हॉट वेदर का, तो उसमें फिर इतना ज्यादा कैसे कराएंगे? What is एक बात सुनो, एक मिनट ध्यान रखना, एक मिनट जो कोल्ड वेदर का फायदा है वो हॉट वेदर का नुकसान है ना, और जो हॉट वेदर का फायदा है वो कोल्ड वेदर का, बात तो वही है, कंटेंट तो एक ही जैसा था। मैं कोल्ड वेदर में कह सकता हूँ भैया कि यू गेट टू योर एपेटाइट improves a lot, you can eat much because the body is working, the metabolism stays fine tuned, everything gets digested, your appetite increases and you can digest everything, right? Number one. Number two, it is the sleeps are more satisfying and fulfilling because you can slip under that quilt and go into deep slumber, right? Correct. And plus in regions where it is generally hot, right, when the winters come there, right, when the winters descend, right, it is almost like a picnic and a festive season, right? Correct. राइट, बट अगर अब ये हॉट वेदर का नुकसान है भैया, अगर तुम सोचोगे तो हॉट वेदर का नुकसान नहीं है। जिस पहली बात तो एपेटाइट सफर्स अ लॉट बिकॉज पीपल ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, राइट, टू क्वेंच देयर थर्स्ट, तो उनका जो एपेटाइट घट जाता है, सीधी सी बात है यार, सोच के देखो जरा। एंड देन सेकंड थिंग इज मींस इट इज नॉट इजी टू स्लीप बिकॉज यू स्वेट अ लॉट, तो फिर यार वो कोल्ड वेदर का फायदा तो हॉट वेदर का नुकसान ना हुआ। गोइंग आउट इज अ टॉर्चर, फेसिंग द हीट, नो द हॉट सन इज वेरी डिफिकल्ट, द बॉडी गेट्स डिहाइड्रेटेड। तो जो कोल्ड वेदर का फायदा है वो हॉट वेदर का नुकसान है। मगर मिस्टर गुरमीत सिंह, प्लीज शिफ्ट ओवर हियर, डोंट टेल द जीनियस। वो बंदा बड़ी मुश्किल ऐसे लिख रहा है, लिख चुकी मैं, वो देख रहा तू तू उमर खयाम का नाम सुने हैं? उमर खयाम दा, he was a great poet, उमर खयाम। कहाँ घुस घुस के मेरे पैर चाट रहा है, इतने तो मेरे कष्ट नहीं है, तो तभी मेरे पैर चाट ली। ठीक है, अब वही में if I talk about silence, you'll be missing out something, I'm telling you. हॉट वेदर में अब हॉट वेदर का फायदा क्या है, यू डू नॉट नीड टू लोड योरसेल्फ विद क्लोथ्स। कोल्ड वेदर का नुकसान है, राइट, तो इसका मतलब कोल्ड वेदर का नुकसान क्या है, यू हैव टू लोड योरसेल्फ विद क्लोथ्स, राइट, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, एंड खास करके दिस द कोल्ड वेदर इज एक्सट्रीमली hazardous for the old people. The chances of cardiac ailments and the strokes increase, right, है ना? करेक्ट, सिमिलर तो फिर वो भी हो सकता है ना, इनटू अ समर्स। डोंट इंटरप्ट व्हेन आई एम स्पीकिंग, पाक योर थॉट्स, ठीक है, You're hot, hot is your- राइट। सो जो हॉट वेदर का फायदा है वो कोल्ड वेदर का नुकसान हो गया, और जो कोल्ड वेदर का नुकसान था हॉट वेदर का फायदा हो गया। मींस पहली बात तो ये हो गई। एंड कोल्ड वेदर में नुकसान क्या है, इन कोल्डर रीजन्स या इन विंटर्स wherever you see the working days are shorter, the days shrink, it becomes dark faster. तो इसका मतलब हॉट वेदर में you can work longer। तो कोरिलेट करके देखो ना, तो ऊपर वाले हिस्से में वी आर टॉकिंग अबाउट दी फायदा एंड नुकसान ऑफ कोल्ड वेदर, मतलब कोल्ड वेदर का जो नुकसान था हॉट वेदर का फायदा वहां पे डलेगा। अच्छा सर, अच्छा उसमें सिर्फ कोल्ड का नुकसान और फायदा बता देना है। एब्सोल्युटली। और सेकंड वाले हिस्से के अंदर what is the benefit of why people want to live in cold weather and why people want to live in hot regions, that's what it is, right? So this is what it is, no, or introduction भी has to vary accordingly। पहले वाले में बोलूंगा, there are some people, no, right, there are many, yeah, there are some people, there are a few, there are many, there are some, no, there are umpteen number of individuals, right, correct, who prefer living in regions that are influenced by the cold climatic conditions, correct, but others dislike this option, right?
और सेकंड वाले में there has always been a fierce argument as to which area या which region is more suitable for leading a comfortable life. Some think it is the colder regions, comma others believe it is the hot regions, the hot ones. बात खत्म होगी. शेरो सच में क्या हो गया? पूरा टाइम वेस्ट है चार्ट सकता है 4 घंटे का. चलो मैं वॉशरूम चली जाऊं. बताओ सर, एक लड़की को क्या चाहिए? ठीक है. Got the point? So you should always focus on this thing, right? कभी भी इंट्रोडक्शन लिखो तो सिर्फ सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखो. ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करोगे तो तुम खुद ही फंसोगे. ज्यादा जलेबी बनाओगे ना तो खुद ही मर जाओगे. Right? Don't do that. Keep it as straightforward, as simple as possible, because that is the best thing to do. Got my point, everybody? So, whenever you look at the question, look at from the bottoms up. अब एक टॉपिक मैं अभी दिया नहीं बहुत दिनों से. If I really look at the topic, the astronomical sales of, okay, who read this book? Yes, Rishi. सर एक मिनट देना. एक कॉल दो सर. क्या कर दो तो नहीं. अभी जो समझा रहा हूँ उसको समझ ले. वो मम्मियां देख रहा हूँ उसमें अपनी. सर आप कंटिन्यू करो, एक कॉल पे हूँ मैं. Call me. I'm on this. I'm taking essay session. You're fucking your time there. Multitask करनी है बेटा. You know when you will start writing again essay ना तब तू गाली पड़ेगी तेरे को. तेरे ऐसे बंदे पता क्या है? वो स्पीड बजाने लगाने के बजाय ना पेट्रोल में आग लगाते हैं जल्दी तक आगे की कर. नहीं होगा. तू पीछे चाहे रॉकेट लगा ले. जब तक पैडल दबाया गया ना गैस का तब तक गाड़ी नहीं चलेगी. यस. महक पढ़ियो. कौन? साक्षी. साक्षी पढ़ियो एक बार. प्लीज रीड दिस क्वेश्चन. तो हाईलाइट किया. सर जो आपने हाईलाइट किया वो पढ़ना है. The astronomical sales being achieved by the consumer companies depicts the power of advertisement, comma, rather than the need of the society where they are sold, full stop. To what extent do you agree or disagree? Write at least 250 words. है ना? Write at least 250 words about what? No. To what extent do you agree or disagree? किस बात से? अब यार एस्ट्रोनॉमिकल समझ नहीं है. ओ माय गॉड. टेलीस्कोप, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी या टेलीस्कोप, है ना? मेरे साथ हो चुका है तभी बता रहा हूँ मैं. मेरा एक्सपीरियंस है. नहीं समझ में एस्ट्रोनॉमिकल सेल्स भाड़ में गया. Being achieved by consumer companies. Consumer companies कौन सी होती है? Just think about the consumer companies. How to decode the essay? Learn about decoding the essay. Consumer companies कौन सी होती हैं? कंज्यूमर्स को बेचते हैं. कंज्यूमर्स को बेचते हैं. हम कंज्यूमर्स को क्या क्या बेचते हैं? FMCG प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. उसके अंदर क्या कुछ आता है? Everything, household thing. और what is this? What is this? ये जिसमें आया है, is it not a consumer good? How you come? ठीक है. कभी मोटरसाइकिल पे आते हो? Is it a consumer good or not? What is this? Consumer good. Even I am using a consumer good, a computer. Is it not? तो एस्ट्रोनॉमिकल सेल के पीछे जरूर फंसना है तुम लोगों को. राइट? ऐसे का डिकोड करना सीखो. कंज्यूमर गुड्स की सेल्स जो है वो डिपेंड करती है. एस्ट्रोनॉमिकल नहीं भी समझ में आया तो भी हम कह सकते हैं भाड़ में जाए. एस्ट्रोनॉमिकल सेल्स नहीं समझ में आया ना सही यार. बट एस्ट्रोनॉमिकल सेल्स क्या है? स्काई हाई. एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? द साइंस ऑफ स्काईज. तो एस्ट्रोनॉमिकल क्या हुआ? स्काई हाई. ये जो स्काई हाई सेल्स है कंज्यूमर गुड्स कंपनीज की, वो एडवर्टाइजमेंट की पावर को शो कर दी है बजाय के सोसाइटी की नीड हो. ये जो सेल्स बढ़ रही हैं
वो सोसाइटी की नीड करके नहीं बढ़ रही है, नीड की वजह से नहीं। वो एडवर्टाइजमेंट करके बढ़ रही। निकल गया क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन निकल आया तो इंट्रोडक्शन बन गया कि आर दी एवर राइजिंग सेल्स एन आउटकम ऑफ एग्रेसिव पब्लिसिटी और नॉट इज अ मैटर ऑफ प्रोफाउंड डिबेट। बात खत्म हो गया, 25 वर्ड इंट्रोडक्शन बन गया। अब तुम लगा लो थीसिस स्टेटमेंट, दिस ऐसे विल डिस्कस द रैशनल बिहाइंड बोथ दी स्टेटमेंट्स एंड शेयर अ प्लॉजिबल। सर मतलब एडवर्टाइजमेंट की वजह से चीजें सेल आउट हो गई है। वो बात अलग है, ठीक है, नीचे हम बात करेंगे उसके बारे में, बट क्रिएटिविटी दिखाना नीचे, जहां लॉजिकली तुम आंसर करो। मैं कहता हूँ हाँ, पब्लिसिटी करके ही भैया एडवर्टाइजमेंट जो है सेल्स बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? सीधी सी बात है। सर पब्लिसिटी तो इंसान हम लोग आपस में खुद ही कर लेते हैं खड़े होकर। अरे देख के ही तो करते हैं एडवर्टाइजमेंट को। मेरे पीछे बोल, मेरे पीछे बोल, मेरे पीछे बोल, बोल। मैं व्हाट आई एम सेइंग, रिपीट आफ्टर मी। I want to fly to Australia. I want to fly To Australia. to बस अब जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो। So publicity is justified, no, that it is increasing sale because it is blitzing the customers, consumers from every possible angle. Television, printed media, no, internet, hoardings, मतलब blitz, bombardment, स्पेलिंग BLITZ. तो क्या हो रहा है उसके करके? कंज्यूमर इज पुश्ड टू बाय द थिंग वंस। जब इतना ज्यादा यूबिक्विटसली जो है प्रोडक्ट नजर आएगा तो बंदा एक बार तो पहुंच ही जाएगा खरीदने के लिए, चल खरीद के देख ले। फिर दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या कहता है? हाउ इज पब्लिसिटी, हाउ इज एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग, नो प्रमोटिंग सेल्स। कहते हैं सीधी सी बात है, इज यूज सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटी पुल इज द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ द सेल्स। आमिर खान ने लेवाइस की जीन पहनी, 1500 रुपए की, जेब में पैसे ना हो, गुरुद्वारे जाके खाना खा लेंगे। जीन वही लेनी है और लेनी है बिकॉज सेलिब्रिटी बोले। This is how the sales are increased. And what does advertisement do? They try to scratch the pain area of the consumers. है ना? है ना? नहीं, मैं बाबा जी का मलहम लगाने से पहले खड़ा भी हो सकता था, मैं दौड़ सकता हूँ। पढ़ा लिखा इंसान भी जाके 35 रुपए बाबा जी का मलहम ले लेगा बिकॉज scratching the pain area. Got the point? And what else? The advertisements are made to target the segments. Women product होगा तो women के हिसाब से बनेगी, children product होगा तो children के हिसाब से बनेगी। ठीक है? फिर बोले यहाँ से out. I don't know you. Not on it. ठीक है? बस कुत्ते के मतलब को लगाना है, इंसान के थोड़ी। ठीक है? So what is happening in this case, no? Right? So they're creating this advertisements according to the segment, so they attract the people. And plus announcements. Buy a car this year, pay next year. Terms and conditions apply. करते हैं, Zero EMI। right? वो चाहे होए चाहे ना होए, advertisement so has pulled the consumers. मगर दूसरी तरफ कहता है नहीं, it is not the advertisement which is raising the sales. कहता है what is raising the sales? कहता है rising population. सोच के देखो, लॉजिक तो तब बनेगा जब क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन समझने नहीं, और पहला क्या होता है हमारा इंस्टिंक्ट क्या होता है? 99% केसेस के अंदर इंस्टिंक्ट ये होता है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, क्वेश्चन पढ़ा, पहले इंट्रोडक्शन लिख ले। क्यों भाई? क्यों? पहले समझ तो लो कि क्वेश्चन मांग क्या रहा था तुमसे, वो तुमने देखा तक नहीं। बता रहे हैं क्लास में, बता रहे हैं क्लास में। और आज भी मैंने ऐसे किया। क्वेश्चन सोचते ही सुनते ही पहले इंट्रोडक्शन मारना है, वो बड़ी अचीवमेंट होगी, वो पहाड़ उतार दिया। 50 वर्ड का लिखो। ठीक है, हनुमान जी को संजीवनी लाने भेजा, द्रोणागिरी पर्वती उठा के ले आए भाई साहब साथ में, है ना? दिस व्हाट इज हैपनिंग। बट क्या है? द पॉपुलेशन राइज इज नो रिजल्टिंग इन इंक्रीमेंट ऑफ द सेल्स, बिकॉज जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर एक चीज की डिमांड बढ़ेगी, तो एडवर्टाइजमेंट क्या कर रही है? इसमें कुछ भी नहीं कर रही।
नहीं। दूसरा जो है, दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, द सेल्स आर बीइंग ड्रिवन बाय द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड फाइनेंस प्लस डिस्पोजेबल इनकम। लोगों की इनकम बढ़ गई है और से परचेज करने की जो टैक्टिक्स बदल गई है, बैंक लोन दे रहे हैं, ले जा बाद में दे दियो। और प्लस लोगों में कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड आ गया, कंपटीशन आ गया आपस में। ओदे कोल बूट वाली कार है तो मेरे कोल भी बूट वाली कार होनी चाहिए, भावे रोटी में गुरुद्वारे खा लांगा। राइट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड व्हाट नेक्स्ट, हर 2-3 साल में जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। And when the technology is being upgraded, the old things become obsolete, and one has to go and buy new. तो sales अपने आप बढ़ेगी। जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो दिमाग चलेगा। Got the point everybody? इसलिए इंट्रोडक्शन पे टाइम वेस्ट करने के बजाय क्वेश्चन को ढंग से डिकोड करो, and there you are. Got the point everybody? ऑनलाइन वाले भाई लोग, साक्षी, स्मृति, महक, Yes, sir. एरिका तेरे लिए नया बेटा, बट आई कैन एज्यूम, प्रिज्यूम और प्रीसपोज भी कर सकता हूँ, तेरा थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। Yes, sir. ठीक है। एक चीज पूछनी है, इसके लास्ट वाली लाइन अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आई ऑलवेज फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल टू स्टे ऑन वन साइड। आई विल कंप्लीटली जो है, आई विल कंप्लीटली एग्री डिसएग्री विद दिस। I will not go in the favor of this. I'll rather say advertisement is doing nothing except informing people about, right, about the availability of a product, and rest of the job is done by being done by the population, the consumer is attitude, and that's it. No personal recommendation, right? yes. ठीक है, शुरू में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, डिसएग्री के ऊपर लिख दो, लेकिन you can write all the way. There is no need that you have to actually write only on one side. अगर तुम्हारे पास डिसएग्री के पॉइंट मेरे पास ज्यादा, तो मैं डिसएग्री लिख पूरा कंप्लीट करके आ रहा हूँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आई प्रिपेयर यू पीपल फॉर द डिस्कस एसेस। वहां पे आपके पास मुद्दा और मसौदा दोनों साइड का होना चाहिए। अगर वहां पे वो कह दिए नहीं है, दूसरे कहते अदर्स डिसएग्री, फिर क्या करोगे? डिस्कस बोथ व्यूज, सारा प्रॉब्लम तो वहां खड़ा होता है। ऐसे एक पॉइंट इधर का, एक पॉइंट उधर का। अब मैं जो ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या आपके जो था ना पॉजिटिव नेगेटिव आउटवे, एक बार आप रीड कर वो हेल्प करेगा। आउटवे का मतलब कंपैरिजन हो गया, बस ये समझ लो। वो जब करते हैं ना, वो जैसे आपने बना रखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव लैब बिकॉज़ से व्हाट साइड इफेक्ट्स करा तो रहा हूँ। I'm coming to that. क्या हो गया ब्रोस? बड़ी हंसी आ रही, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही है ना। When I'm talking, it is better to stay quiet. Okay, guys. So let's discuss this once more. So, क्या होता है when you have different types of essays? What generally happens there? अब I'm going to take one essay which is specifically time, एक point दोनों तरफ है, ठीक है? और उससे पहले टाइप्स ऑफ एसेज एक बार नजर मार लें, then we're moving ahead. सबसे इम्पोर्टेंट है जो मोस्ट, हालांकि मैं ये नहीं कहता कॉमनली आते हैं, कुछ भी आ सकता है, रीजंस वाले भी आ सकते हैं, कॉजेस वाले भी आ सकते हैं, सॉल्यूशन वाले भी आ सकते हैं, एग्री डिसएग्री भी आ सकते हैं, डिस्कस भी आ सकते हैं। बट 3 टाइप के मेजरली एसेज बनते हैं, कैसे भी करो। पहला तो हो गया ओपिनियन, जिसके अंदर एग्री और डिसएग्री हो गया। अब जो एग्री और डिसएग्री का मतलब होता है कि आपको जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन इज टू बी रिटन ऑन वन साइड, कंक्लूजन इज नॉट टू बी रिटन ऑन
पार्शियल या मिडिल पाथ यहाँ पे नहीं हो सकता। फिर आप बार बार आके पूछोगे, अभी जब मैं करा रहा हूँ तो ऐसे लिख रहे हैं भाई साहब, उसके बाद में पूछो क्या लिखूं। When I am telling you something, listen to it. ठीक है, तो एग्री और डिसएग्री का मतलब होता है यू कैन राइट बोथ साइड्स, बॉडी पैराग्राफ दोनों साइड पे चल सकता है, मगर जो इसकी जो कंक्लूजन है दैट हैज टू बी ऑन वन साइड। ठीक है, सेकेंड थिंग इज टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, मतलब कहां तक, किस मुद्दत तक, किस एक्सटेंट तक, किस लेंथ तक आप इससे जो है आप इससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। राइट, दिस इज व्हाट इट इज। अब यहाँ पे मैं पार्शली भी एग्री कर सकता हूँ, आई कैन पार्शली डिसएग्री आल्सो, राइट, एंड आई कैन इवन कंप्लीटली डिसएग्री या कंप्लीटली। सिर्फ ऊपर वाले और इस वाले हिस्से में ये इतना फर्क है, अगर मैं किसी चीज से एग्री करता हूँ यहाँ पे कंप्लीटली एग्री कर दूंगा, और डिसएग्री करो तो कंप्लीटली डिसएग्री करो। ठीक है, देन यू हैव डिस्कस। डिस्कस में मैंडेटरी हो जाता है कि दोनों साइड्स को अच्छी तरह से डिस्कस किया जाए। ठीक है, डिस्कस मींस बोथ साइड्स, और कंक्लूजन मिडिल पाथ भी हो सकता है और वन साइड भी हो सकता है। हालांकि आई फील कंफर्टेबल मोस्ट ऑफ द एसे में, जितने में एसे तक लिख के आया हूँ उसमें एक साइडेड बन गया है। आई नेवर गॉन ऑन मिडिल पाथ, 6 के 6 ऐसे लिखे, क्लैरिटी रहती है। To what extent में सिर्फ middle path ही लिखना क्यों लिखना है सिर्फ मिडिल पाथ? मर्जी है। One side मेरी मर्जी है भाई, मैं कंप्लीटली एग्री भी कर सकता हूँ। और partially भी कर सकते हाँ। हैं। To what extent में ऐसा है ना कि लिख सकते हैं वो दोनों के बारे में। To what extent का मतलब ये कहाँ तक? एक के बारे में। राइट, सिंपल थिंग है यहाँ पे। अगर आप कंप्लीटली एग्री कर रहे हो तो कंप्लीटली एग्री कर दो, कंप्लीटली डिसएग्री कर दो कंप्लीटली डिसएग्री कर दो, लेकिन क्या दिक्कत है? मगर दोनों साइड लिख सकते हो ना, लिख तो आप एग्री वाले में भी सकते हो यार। कहाँ से disagree It is completely your prerogative. Absolute. और वहां पे एक पॉइंट आ रहा है, उसको कैसे एक्सटेंड करना नहीं आता तो दूसरा साइड लिख दो भैया, वर्सेटैलिटी लैंग्वेज ही बनी रहेगी, आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाओगे, सीधी सीधी बात है। राइट, और जहां पे हम लोग कहते हैं कि मैं सपोज करो एग्री डिसएग्री कर रहा हूं मैं, तो एक उसने किसी ने पॉइंट रखा जैसे एडवर्टाइजमेंट का एक पॉइंट था, तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, वो क्या एज्यूम करके चलते हैं कि उसके करके सेल्स बढ़ रही है, पीछे आगे रियलिटी लिख दी, नहीं भैया एडवर्टाइजमेंट करके तो नहीं है, ग्राउंड रियलिटी देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो क्या होगा, आप लॉजिकली एक फ्लो बना रहे हो लैंग्वेज, यू आर क्रिएटिंग अ फ्लो। पहले आपने वो लिख दिया कि जिस स्टेटमेंट को उन्होंने ओपन हेडिंग स्टेटमेंट दिया था, एग्री डिसएग्री उससे करवाने को कहा था, पहले उसके बारे में लिख दिया कि वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, फिर आ जाओ नीचे ग्राउंड रियलिटी है, सेल बढ़ेगी भाई। एक एरिया के अंदर रोज 1000 लोग हैं और एक एरिया के अंदर 10,000 लोग हैं, तो बताओ सेल कहाँ भी जाएगी? 10,000 वाले में चाहे एडवर्टाइजमेंट हो चाहे ना हो, गॉट अ पॉइंट। ठीक है, द डिमांड राइजेस व्हेन द पॉपुलेशन राइजेस, राइट? सो discuss it becomes mandatory to write both the sides, but here still you can have the conclusion on one side. Yes. तो जैसे हम एक साइड लिखते जाते हैं तो उसी में जब हम एग्री के बारे में लिखते हैं तो ऑन द अदर साइड पे लाइक बाई अदर डाल के उसमें लिख सकते हैं, पहले एग्री का लिख लिया उसके बाद जब ऑन द अदर साइड पे ऑन द अदर हैंड का अलग पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। मतलब हम जैसे हमने एग्री एक लाइन दे दी उसी में उसको दूसरे दोबारा जाना पड़ेगा। नहीं सर, अभी आपने जैसे बताया ना वो कि वैसे लिख दो तो कल बहाना मार के बच गया, ये फॉर्मूला सीख लो। हाँ सर, मैं स्कूल में सर क्या हम क्या बोलेंगे, हम लड़की नहीं अच्छा बोला। में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है। सर आपने ये बोला, आपने कभी नहीं बताया कुछ नहीं, ऐसा, अगर पता नहीं एग्जाम कैसे दिमाग में आया। से कुछ दिक्कत हुई होगी लिखने में या कुछ हो रहा होगा। अरे पता उसको, वो इसके सामने तो हुआ था पारुल के फ्योंसी का यार, सब पता है उसको, मैं सीधा नहीं है तो उसमें ना बेस होता है। सब बताता हूँ फॉर्मूला, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और तो बने सबको बताता हूँ, वही वाला फॉर्मूला अपना लो भैया, कुणाल वाला फॉर्मूला, उसका नाम रखा हो कुणाल फॉर्मूला। उसने तो खाया था वो। हाँ तो एक बहाना तो बनी गया। ओके गाइस, सो व्हाट डू यू थिंक? देना ही साइलेंस साइलेंस साइलेंस, डोंट वेस्ट टाइम। देखो, जब आप एग्री लिख रहे हो तो एग्री का पैराग्राफ बनाओगे,
और डिसएग्री लग रही हो तो उसको अलग पैराग्राफ बनाना। उसी तरह से अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पे लिख रहे हो तो पॉजिटिव का पैराग्राफ अलग बनेगा, नेगेटिव का पैराग्राफ अलग बनेगा। यू कैन नॉट मडल द थिंग्स, डोंट मडल देम अप, ना काम खराब हो जाएगा। ठीक है, टू व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन इज द सेम थिंग, पार्शियल या वन साइडेड, डजंट मैटर एट ऑल। देन कमिंग टू द प्रोस एंड कॉन्स, positives and negatives, again one sided conclusion is required, चाहे दोनों साइड लिख दो, ठीक है, कंपेयर कर सकते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट एक ही बात है, वन साइड कंक्लूजन चाहिए, एनीथिंग एनीथिंग, ठीक है, गुड और बैड। मगर जैसे ही आया टू डू द एडवांटेजेस आउटवे मतलब मोर देन डिसएडवांटेजेस, तो भैया आपको दोनों साइड को लिख के कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब कंपैरिजन अपने आप ही हो गया, एक एडवांटेजेस का पैराग्राफ, एक डिसएडवांटेज का पैराग्राफ बनेगा तो जाके कंपेयर होगा, ठीक है, उसमें कंक्लूजन में जाएगा, ठीक है, करेक्ट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया ये जो है यहाँ पे एडवांटेजेस ज्यादा है या नहीं है। डू यू एग्री दैट द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, यस और नो, ठीक है, एंड देन तो मतलब वन साइडेड। हाँ, यहाँ पे यस कह सकते हो या नो कह सकते हो, मगर यहाँ पे मेरे पास लीवरेज ये है कि आई कैन से दैट द एडवांटेजेस डू नॉट आउटवे द डिसएडवांटेजेस, इंस्टेड दे आर एट पार। गॉट अ पॉइंट? बट व्हेन यू गेट देयर आर डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो यहाँ पे मिडिल पाथ फिर दे सकते हो, मगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियर एनफ गाइस? ठीक है, so you must remember these things. And last but not the least, the causes, problems and solutions. यहाँ पे problems and solutions, causes and problems, causes, effects and solutions, effects and solutions, and why it is happening and what are the solutions. ठीक है, correct? Clear enough? So you must be careful with this one. Let's take today's essays. I'm going to do 2 essays to discuss today, and then I'm going to talk about, right? Then I'm going to dictate one essay. मैं ना के आती हूँ, मैं हाय भी नहीं बोलती हूँ। पवन, अच्छा क्या बोला था? साले बेसिक करा के जाए नलायक। So पहले I'm taking this essay. Smriti, are you there? Yes, sir, I'm here. बच्चे के सामने से बात। चल। कर ले। तो चाय बनवा लो ना अंदर। तो ये कैसे देना है? ये तो क्या था? ये सब मुझे बच्चा बच्चा बोलता है। ऐसा कहते हैं। आइए। सर, मैं फिर ना बात करूँ। सुन रहे हैं सर? कानून से सुन रहे हैं सर? सर बोलो। बोलो। एक तो से मतलब चिंता लगा दी। उन्होंने कहा कि मेरे आईडी में आए हैं, मेरे भाई इतना ही और वो पैसा ही काम है, वो सही चीज है, वही सब चीजें मगर पीटी का जरूर टेस्ट करो, पीटी का टेस्ट कराता हूँ। Okay, let us look at this. ये मेरे तो बड़ी चाहिए मुझे। ऐसी डिमांड पे जो कम हो गई स्टूडेंट के लिए पापा खरीदेंगे तो 6 तो है, 6 भी नहीं आए ना, तो 6 के 5 थोड़ी मांग लेंगे।
क्योंकि मैं कंप्यूटर दे रही हूँ हाँ भाई चाहिए Okay, guys. So some people suggest that bringing up children by whole family, including uncles, aunts, and grandparents, is better rather than only by parents. But others disagree with this arrangement. Discuss, right, and give your opinion with examples. Okay. Let us talk about it now. Okay. ये वाला करके आ जाओ नहीं दूसरा. So what does it suggest here? No? Yeah. That some people suggest that bringing up children by the whole family, including uncles, aunts, and grandparents, is better rather than only by parents, but others disagree with this statement. Discuss and give your opinion. What does it suggest? अब यहाँ पे क्या है? जब when we start from the bottoms up, right? Let us go to the lower. Okay. So discuss and give your opinions, right? Means so what does it come out to? Means rather than अब देखो अगर हम इसको बात को क्वेश्चन को ब्रेकअप करते हैं तो what does it come out? Means it's better to bring youngsters up in joint families or nuclear ones. If you really say extended families, क्या मतलब निकलता है इसका यहाँ पे? अच्छा ये मैं कंप्लीट कर दूँ बच्चे को डिटेल्स दे दूँ ठीक है. So what do we remember? What do we get here? अगर extended family की तरफ हम लोग चले तो क्या what can be the benefit for the children? सोच के देखो. The most important thing is means it becomes easy to monitor, right, activities of youngsters since someone is always there, right, to keep a check. Am I right? Yes, sir. And second thing is youngsters learn about importance of families and relations. Correct? Okay. Okay. And they grow up as right ones who are empathetic, right, and right akin to सर ये भी हो सकता है कि they will not feel lonely if they are grown up like single child. right. They do not feel lonely now because huh? Akin मतलब close. Yeah. Correct. They don't feel lonely at all, right?
ठीक है? इसमें लिख लो प्रैक्टिस में अभी नहीं, अभी एक प्रैक्टिस में तो आ जा, ठीक है? करेक्ट? ओके, ठीक है? And what else is there? Means it becomes easier to perpetuate, right? Traditions and culture easily, right? Am I right? But what about nuclear families? No? Means nuclear family में emotional connection, parents is established firmly, right? they give time, extra time to work on Right. their weaknesses. Correct? They give time to each other and work easily. Their weaknesses. बड़ी family में नहीं होता है। It becomes easier to foster youngsters as with distinct and independent personality. आगे समझ? They become more responsible towards their future of. They become more responsible in terms of their future of their parents, making a future for their parents. Emotional हो गया ना, Emotional हो गया, उसमें आ जाएगा. Can we write की जो बच्चे के लिए distractions नहीं join nuclear family में, so they can focus on their. Yeah. Means How I can we say, write this? we can say the absolute control can be. सर with distinct and independent personalities के बारे में मुझे समझ नहीं आया. When you are growing up in a nuclear family, it is your children you are focusing on. Right? When there are a lot of children, you're trying to bring a synchrony between them. मेरी personalities से नहीं समझ आया. भाई आप अपने बच्चों पे फोकस कर रहे हो तो उनकी पर्सनालिटी को पहचान भी रहे हो, अच्छी तरह से उनको डेवलप भी कर रहे हो. When you're growing up in a joint family, there are so many children. किस पे फोकस करोगे, किसको छोड़ोगे? Got a point? You try to put all the eggs in the same crate. Got the point? But in this case, it doesn't happen. Right? And distinct interests and independent interests can be identified. It becomes easier for the parents to do so. Right? वो joint family में नहीं हो सकता. Right? Very easy to explain. So यही बात. आप समझो इस बात को ना. And absolute control can be established. Then nobody will use a pretext कि मेरे को उसने हाँ कर दिया था, मेरे को उसने हाँ कर दिया था. Right? Means no pretexts. And bahana and scapegoats or mistakes. Got the point? कोई बलि का बकरा नहीं बनाया जाएगा किसी अंकल आंट को. This is what it is, no? The absolute control that can be established. So read this once, Meg. Then we are moving to the today's essay, which I am going to dictate today. Please, beta. Extended family. It become easy to monitor activities of youngsters
since someone is always there to keep a check. Second point, youngsters learn about the importance of families and relations. Third point, they grow up as ones who are empathetic and keen to coordinating. They do not feel lonely. And lastly, it becomes easier to perpetuate traditions and culture easily. Nuclear families, emotional connection with parents is established firmly. It becomes easier to foster youngsters with distinct and independent personalities. Lastly, absolute control can be established, no pretext, and scapegoats for mistakes. ठीक है? Got the point? Yes, sir. Means if you make a mistake, you can't escape the punishment, right? कि मेरे uncle ने बोला था, aunt ने बोला था, इसने बोला था, उसने बोला था, so I did it. Cletus. He the crystal itself. Okay, guys. Everybody's clear about this? Yes, Priti. Yes, sir. ठीक है, Sakshi, Erika, I'm going to dictate this second essay today, right? Everybody will write, and I expect you to do in the over the next week, right? Cletus. Okay, guys. ये जो है मैं सेकंड वाला ऐसे लूंगा क्योंकि उसमें रीजंस भी दिए हुए हैं. तो कौन सा सेकंड वाला? People suggest that ये वाला. स्क्रीन पढ़ ले. Screen पे को. स्क्रीन पे. अच्छा ऊपर. स्क्रीन बड़ी स्क्रीन है. Nowadays, more and more. देख लो फिर फाइनली इसको. हाँ भाई, Smriti, read this one. Both the essays, both the topics. The difference in age between parents and their children has increased compared to the past. Do you think the advantages of this trend outweigh the disadvantages? And the next one is, nowadays, more and more people decide to have children later in their life. What do you think are the reasons for this? Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages? अब देख बोला मेरी वाइफ ने बनाया कह रही है फिर तुम लेकर Okay. समझा रहे हैं कि जरूर ज्यादा लिखा है. हाँ सर डिस्टर्ब कर रही है तब से पीछे बैठ सर. मैं डिस्टर्ब कर रही हूं तो मैं आइए. आओ एकदम अगले खंड से आओ. लगती है ये. अबे कितना लाया है अभी क्या सुन देखना इसको. रोल क्यों बना अरे ऐसी सेल्स मार्केटिंग वाले ऐसे लेके चलते हैं अपना जिसको क्या पता. चलिए guys. Okay, guys, let's talk about it now. Let us start building up this now. Why so people are deciding to have families much later in life? सीधी सी बात है. ठीक है. Why they are deciding to have life, children much later in life? तो दो यहाँ हमारे पास reasons हो गए. एक तो पहला हो गया, do the advantages of this trend outweigh the disadvantages, and what do you think are the reasons for this? ठीक है. About what? Means so this is your background information. Nowadays, more and more people decide to have children much later in life. What do you think are the reasons for this? And do the advantages of the trend outweigh the disadvantages? Let's talk about it. Means causes and benefits
Yes. क्यों? Drawback. Question पढ़ो एक बार. Causes foolishness, reason foolishness. Question पढ़ना. What do you think the reasons for this? That nowadays वाला बोल रहे हो ना नीचे वाला? हाँ. Correct? Nowadays more and more people. अच्छा हाँ है. Decide to have children later in their life. What if? So why it is happening, no? अभी इसी के साथ हम लोग जो है, means I can say that, no? People have become more career oriented. Means especially women. Correct? Correct? And want to accomplish their goals